Hello, my dear students. Jai Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about B.Ed first semester English Pedagogy ro Unit 2 में start करिबा method and approaches in ELT. Okay. So let's start. 2.1 ने हमर रहिछि कोन ना method approach and technique, then grammar translation method, direct method, bilingual method and Dr. West's method, then oral situational and structural approaches, then communicative language teaching, micro scale and ELT. Okay. So let's start. First ଆମେ ଜାଣିବା method approach and technique. Okay. तो method कौन रहिला? A method is a way of doing things. A method deals with how to teach. Okay. method ହେଉଛି ଗୋଟେ way, ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ମେଥଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଉ। ଓକେ, କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ବା କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନ୍ୟୁ ୱେରେ ଗୋଟେ ବନେଇବା। ଓକେ, କେଉଁ ମେଥଡ଼ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା, କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ଆମ ଏମ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା। ଓକେ, ସୋ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ମେଥଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ। ସେମିତି ଟିଚିଂରେ ବି ଆମେ ମେଥଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ, ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଓକେ, ସୋ ମେଥଡ଼ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ହାଉ ଟୁ ଟିଚ୍। ଓକେ, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଟିଚ୍ କରିବା ବା କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ। ଓକେ, କେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆମେ ନ୍ୟୁ ନଲେଜକୁ ଗେନ୍ କରିକି ତାର ଗୋଟେ ୱେ ବନେଇକି କେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଆମେ ମାନେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଶିଖୁଛେ ନା, ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଶିଖଉଛେ। ଓକେ, ସୋ ଦେନ୍ thus method is a overall plan of teaching approach. Its main object is how to teach language. Okay, तो basically aim माने perfection रे teaching perfection ने method means कौन होची ना how to teach language, केमिता में language को teach करेगा। Okay, then method of teaching English कौन होची ना old method of teaching और classical method आ गोटे रोज को ना new method of teaching। Okay, then असला classical method रे कौन जाउची ना grammar, translation method, natural और direct method। ओके, ये दुटा जाउची क्लासिकल ले। देन न्यू मेथड रे कोन आछी ना डॉक्टर वॉस मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड। ओके, देन फर्स्ट हमें जानबा कोन ना अप्रोच कोइला में कोन बुझी। ओके, अप्रोच इज एन अटेम्प्ट फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन सम अजम्पशन which may be proved or not. ओके, अप्रोच माने कोन? अप्रोच मीन्स आमे गोटे अटेम्प्ट नै था गोटे जिंस पई गोटे जेकोनोसी जिंस आमे करिया जाउछु तार इम्प्रूवमेंट पई। ओके, जेकोनोसी जिंस आमे तार माने तार अजम्पशन नै थाउ जे आमे हां ए कामडा करिया बोली। ओके, तो से जिंसडर इम्प्रूवमेंट केमिति आमे भलो वे रे करि परिबा, तो आमे ताको अप्रोचिंग वे रे आमे तार अजम्पशन करिथाउ जे हां एंती कले ए जिंसडा हमर बेटर वे रे हमर हेई परिबो। ओके, तार गोटे अप्रोचनेस हमर आसी थाए। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीचिंग अप्रोचेस, गोटे डायरेक्ट अप्रोच आ गोटे होची इनडायरेक्ट अप्रोच। ओके, टीचिंग अप्रोचेस डायरेक्ट अप्रोच रे कोन अछि ना डायरेक्टिव, डिडक्टिव आउ डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, जोटा कि हम डायरेक्ट अप्रोच करि थाउ। देन इनडायरेक्ट अप्रोच कोन ना इंडक्टिव, रिफ्लेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव आउ इंक्वायरी एक्सप्लेनेटरी। ओके, सो फर्स्ट हम जानिबा टेक्निक। टेक्निक कौन है? टेक्निक इज द टीचिंग टेक्नोलॉजी और a trick to reuse the teaching goal which actually takes place in classroom. Okay, टेक्निक मीन्स कौन ना टेक्निक हूँ गोटे एमती टेक्नोलोजी ट्रिक जो थी कि कौन ना आम एक्चुअली यूज करता आम टीचिंग गोल को अचीव करियर। ओके, तो जेकोसी टेक्निक द्वारा आम कौन करता ना पिलामानकर न्यू न्यू आइडिया जेनेरेट करिबारे, पिलामानकु किछि न्यू न्यू जिनिस शिखेइबारे। ओके, तांकु न्यू न्यू सब्जेक्ट सहित तांकु माने कंबाइन करिबारे, तो पिलामानक माइंड तो सब किछि जिनिस को हठात कि माने अडॉप्ट करि परिबन ना, तो हमकु किछि न्यू न्यू जिनिस तांको ऊपर अप्लाई करिया पड़िबो, तांकु किछि किछि नुआ नुआ जिनिस हमकु शिखेया पड़िबो। ओके, तो जेमिति से ता सहित अक्वाइंटेड हेकि निजको गोटे प्रेजेंट वे रे से जानि पारिबे जे को जिनिसटा ठीक होची कोटा भूल होची, को मेथड रे पिला माने भल से शिखि पारिबे। ओके, आउ गोटे कथा होची कि पिला मानकर जेतो सब माने जेहेतु छोट पिला माने तार छोट पिला होंतु बा हायर लेवल रो पिला होंतु, बट पिला होचंदी पिला। ओके, सो सेमानक पई हमें जेकोसी प्रकार मेथड अप्लाई करिबा जेमिति कोन ना सेमाने गोटे बेटर वे रे सब जिनिस को अंडरस्टैंडिंगनेस रे बुझी पारुथिबे। ओके, ताकर गोटे बेटर अंडरस्टैंडिंग आसुथबो जे हां हमें जिनिसटा जानि पारलु बोली, किछि न्यू आइडिया हमें गेन कलु बोली। ओके, सो से जो टेक्निक आम यूज करता सर्ट टेक्निक हो, लंग टेक्निक हो। ओके, विभिन्न प्रकार टेक्निक आम यूज करता। सो से टेक्निक गुड़ाक ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा, प्ले वे करवा, ओरल ड्रिल करवा। ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स कौन ना
आमे पिलामानंकु एमितिका किछि टास्क दबा एमितिका किछि टॉपिक ऊपर डिबेट करिया दबा बा किछिटा एमति न्यू टॉपिक ऊपर किछि रिलेटेड करिया दबा जोथि कि कोन ना पिलामाने निज ब्रेन खटाइबे ओके पिलामाने निजे भाबिबा को लागिबे किछि न्यू जिंस क्रिएट करिवे ग्रुप डिस्कशन हो बा निज निज भितर किछि क्वेरी डिस्कशन हो करी कि समय कोन करिवे ना किछि न्यू न्यू आइडिया को जनरेट करिवे ब्रेन स्टॉर्मिंग करिवे ओके डिस्कशन माध्यम रे हो जेमिति भी हो से किछि ना किछि आइडिया को तांको ब्रेन द्वारा माने तांको निजर आईक्यू को खटाई कि से कोन करिवे ना न्यू न्यू आइडिया सब जनरेट करिवे देन प्ले वे मेथड रे खेली खेली पिलांको पढ़ाइबा ओके देन ओरल ड्रिल भी करिबा पिलामानकु सो सॉरी सो ग्रामर 2.2 रसला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डायरेक्ट मेथड बाइलिंगुअल मेथड एंड डॉक्टर वर्स मेथड ए सब विषय जानबा सो फर्स्ट हम जानबा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहले कोन बुझी था ओके आल्सो नोन एज ओल्डेस्ट मेथड और क्लासिकल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड आम फास्ट पढ़ी के आसले जे ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड आम ओल्ड और क्लासिकल मेथड रे जाउची देन पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज ओके प्राइमरी स्टेज रे एटा पॉपुलैरिटी थिला देन मेनली फोकस ऑनवर्ड टू सेंटेंस और ट्रांसलेशन इन मदर लैंग्वेज ओके मेनली फोकस करा जाउथला कोन ना ट्रांसलेशन रे सेंटेंस ऊपर ओके देन टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रो वर्ड बाय वर्ड ओके टीचर इतरे कौन करथांती ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे टीचर ईच एंड एवरी वर्ड को तांका मदर टंग रे सी ताको ट्रांसलेशन करथांती ओके जहार जो मदर टंग हेइताउ उर्दू हेइताउ ओडिया हेइताउ बेंगली हेइताउ जे कोनोसी ईच एंड एवरी मदर टंग को टीचर कौन करथांती ना ताको ट्रांसलेट करके पिला माननकु बुझेइबा को लागिथांती इंग्लिश रे ओके लिटरेचर इंग्लिश रे देन मेरिट्स कौन हो इकोनॉमिकल टाइम सेविंग कन्वेंटेंट होची ओके वोकाब पिला मानकर वोकाब बिल्डर होची देन शॉर्टेस्ट वे एंड फॉर एवरी सिचुएशन एटा गोटे शॉर्टेस्ट वे पिला मानकु इंग्लिश लैंग्वेज सहित कौन ना एक्वेंटेड करि पारे देन क्लैरिटी लेस चांसेस टू वैग्यूनेस ओके आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन तो देखो बेसिकली कौन ये जदि आम ट्रांसलेशन बेसिकली आम ग्रामाटिकल एरर रही आम कौन भी फ्लुएंटिकल आम स्पीच हो आम राइटिंग रे हो एसे राइटिंग रे जो जेकोसी जिनस भी जदि आम ग्रामाटिकल ट्रांसलेशन मिस्टेक रहा तो आम निहाती भाव में इंग्लिश माने लिटरेचर बहुत बेटर नॉलेज आमको मिल जाए ओके सो कौन सी जगह आम के गलती फल्टनेस आराम से आसब ना सो से हिसाब से आम मेरिट देखा मिल ओके जो कि कौन ना आमको बेसिकली क्लैरिटी मिल ओके देन आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन आम ट्रांसलेशन आर्टा भी आम जानीजु ओके देन एप्रिशिएटिव थ्योरी लर्निंग इज टू कनेक्ट ओल्ड न्यू आइडियाज ओके कौन ना न्यू आइडिया सहित सॉरी ओल्ड आइडिया सहित न्यू आइडिया को कनेक्ट करके आम गोटे न्यू अनदर न्यू आइडिया को आम इन्वेंशन करें जमीक ब्रेन स्ट्रॉमिंग रे ओके सो डिमेरिट कौन आसला ना गेटिंग ऑब्स्टेकल्स बहुत प्रकार ऑब्स्टेकल देखा मिलता है ओके देन नो फोकस ऑन स्पीकिंग इनोटेशन प्रोनाउंसिएशन रे ओके तो प्राय पिला कौन ना स्पीकिंग और इनोटेशन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक करता देन लॉसेस करेक्ट इफेक्ट ओके सो कैंट एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग अननेचुरल मेथड तो सब जिन को आम कौन ना प्रॉपर वे आम केबे भी ट्रांसलेट कर पारि न थाउ जे माने सब जिनस को भी बेले बेले एमती किसी वर्ड आसी जाए जोटा कि ट्रांसलेट करने को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आसी जाए ओके देन डायरेक्ट मेथड आसला डायरेक्ट मेथड आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड और रिफॉर्मल मेथड ओके डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज कौन ना नेचुरल मेथड और रिफॉर्मल मेथड ओके इट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस प्रिंसिपल फ्रॉम जर्मनी इट इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी ब्रांच ऑफ स्टडी ओके डायरेक्ट मेथड आम ऑरिजिनेटेड कौन ना फ्रांस प्रिंसिपल्स और जर्मनी ओके सो ये कौन very useful method branch study पाई okay then हमर असला it enhance speaking and listening method okay direct method द्वारा हमर speaking और listening method रो enhance होता है based on assumption okay हमें better assumption करी पारि थाउ जे हमें को वे रे हमें भल से जिंस को सीखी पारु छि बोली okay then merit हमर असला कौन ना आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन द लेक्चर डायरेक्शन ओके डायरेक्ट मेथड कौन आम बिटवीन लेक्चर माने लेक्चर चली भी आम टीचर को कौन करें ना मझे उठिकी हाथ टेकिकी निजर हैंड राइज करके आम क्वेश्चन अप कर ओके जी सर आमर ये मिस्टेक रोचे आमर ये प्रॉब्लमेटिक माने आम ये कोरी रोचे आम ये क्वेश्चन जापारनु बुझीपारनु ओके सो डायरेक्ट मेथड आम से डायरेक्टली आम सर को क्वेश्चन कर देन आसला कौन ना स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन फुल ऑफ एक्टिविटीज ओके ग्रामर टॉट यूज नॉट वी रूल्स ओके then demerit कौन आसला ना नो ट्रांसलेशन ओके टाइम टेकिंग प्रोसेस नो सुइटेबल फॉर क्लासरूम ओके each student नॉट satisfied किछिटा पिला satisfied हेई न थांती
देन रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल टीचर मान रिक्वायरमेंट दरकार जब टीचर ही बेटर नथिबे तो पिला मानकु से बेटर स्किल केमति सिखेबे ओके देन बाइलिंगुअल मेथड इन दिस मेथड टू लैंग्वेज आर यूज्ड टारगेट लैंग्वेज इज दैट व्हिच वी लर्न बाय मदर टंग ओके तो बेसिकली कोन ना बाइलिंगुअल मेथड रे हमें दुटा लैंग्वेज यूज करथा गोटे होची हमर इंग्लिश लिटरेचर आ गोटे होची हमर मदर टंग ओके दुटा लैंग्वेज रे टीचर टीच करिया को लागि थांती ओके देन इन दिस मेथड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ओके बाइलिंगुअल मेथड कोन ना दुटा मेथड रे कॉम्बिनेशन गोटे होची ग्रामेटिक जो हमर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आउ डायरेक्ट मेथड ए दुटा रे होची कॉम्बिनेशन ओके सो features कौन रोची word to word translated not to done okay then word to word translation basically है पड़ते then माने देन आसला मदर टंग इज यूज टू क्लियर मीनिंग ओके मदर टंग क्लियर मीनिंग को आम यूज करी यूज टू बाय ओनली टीचर नॉट बाय स्टूडेंट ओके बाइलिंगुअल मेथड रे आम बेसिकली कौन करथाउ ना फर्स्ट आम कौन करथाउ ना हमर मदर टंग रे जिनसटा को एक्सप्लेन करी थांती टीचर देन ताको ट्रांसलेट करी थांती इंग्लिश लिटरेचर रे ओके सो मेरिट को आसला ना टाइम एंड लेबर सेव्ड लेस कॉस्टली ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी कहीं लिटरेचर रे बेसिकली ऑडियो विजुअल एड्स कंपलसरी ही न थाए बट यूज करवा आवश्यक देन स्टेज एंड स्पीच प्रैक्टिस ओके लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्मेट हियर ओके लिंग्विस्टिक हैबिट पीएटी फॉर्मेट होता है देन नॉट नीडेड ट्रेन टीचर बेसिकली दुईटा मेथड जो रोचे तो बेसिकली ट्रेन टीचर बेसिकली आवश्यकता रहे ना तो जो मानकर मीडियम नॉलेज थी एक्सपीरियंस आ स्किल हैपेन करेंगे से आराम से लेक्चर को डिस्क्राइब करेंगे ओके देन आसला कौन डिमेरिट स्टूडेंट पासिव बेसिकली कौन जेहेतु बोरिंग लेक्चर टे गले स्टूडेंट पासिव मुड को पलैबे एक्टिव मुड रे ना देन लैंग्वेज मिक्सड हो सो टे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखा मिल देन रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस इग्नोर करदे पिला माने दुईटा जिनस को पिला माने केबे भी एक सहित एक्सेप्ट करें तो से कौन करेंगे ना रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस को इग्नोर करिया लगे देन सुइटेबल इन लोअर क्लास ओके सो डॉक्टर वेस्ट मेथड कौन कहूँ ना डॉक्टर वेस्ट had done research on teaching English as a foreign language in India and developed this method as a response to the direct method. Okay, डॉक्टर वेस्ट मेथड कौन तांकर रिसर्च आउ टीचिंग हिसाब रे इंग्लिश होची गोटे फॉरेन लैंग्वेज जोटा कि इंडिया हमर डेवलप करची तार मेथड हिसाब रे तार रेस्पॉन्स हिसाब रे जोटा कि डायरेक्ट मेथड हिसाब रे ओके देन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट ए टीचर शुड टीच रीडिंग स्किल फास्ट टू इंप्रूव रीडिंग कम्प्रेhension स्किल ओके बेसिकली तांको हिसाब रे कोन ना टीचर को फर्स्ट तांको निजर रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करिया को पड़िबो ओके रीडिंग कम्प्रेhension स्किल को टीचर फर्स्ट रीड करिवे जदि एखड़ा मु तुमको जहाँ भी पढ़ाऊँगी जमीती भी पढ़ाऊँगी जदि मु बेटर वे न पढ़ेबी ओके गोटे वर्ड को पढ़ा को सेमती हाँ फ्लमिंग हो जाए ओके सेमती गोटे कंटिन्यूअस वे आम चलिए फ्लमिंग हो जाए कौन से वर्डटा आम पाटर टी मैंने एपट सेपट हो जाए बट ता माने नुह जे कौन से सेंटेंस को एपट सेपट कर पढ़ी ओके जदि ये लिखा है द टीचर शुड टीच रीडिंग स्किल फर्स्ट टू इम्प्रूव रिगार्डिंग सॉरी रीडिंग कम्प्रेhension स्किल ओके बट ये मुझे कौन पढ़ी ना एपट सेपट हो पढ़ी टीचिंग कम्प्रेhension स्किल रीडिंग स्किल फास्ट टू इम्प्रूव एमती पढ़ले केमती लगे ओके प्रॉब्लम माने पिला को बुझिया को भी प्रॉब्लम हम ना सार कौन पढ़ुंट बोली मैम कौन पढ़ुंट बोली ओके तो पिला कभी कन्फ्यूजन में पकेबा ना ओके सो देन आसला टाइप्स ऑफ रीडिंग एबिलिटी पिला टीचर मान रीडिंग एबिलिटी ओराल हो साइलेंटली हो आराम से भल से हवा दरकार ओके डॉक्टर वेस्ट रिकमेंडेड ऑन एसेंशियल वोकाबुलरी लिस्ट ऑफ 2280 words which have been classified as कौन ना general word then असला मोर essential word okay so आउ असला कौन ना common environment word specific environment word so first हमें जानबा कौन ना principle कौन रोची grammar is taught in the grammar is taught inductively using model sentence maximatization and mixing are common in language learning conversation is a practice in a control method okay तो बेसिकली कौन गोटे प्रिंसिपल रहा दरकार जमीती कि ग्रामर को आम जमी भी टॉट करूँ गोटे इंटरेस्टिंगली मॉडल हो सेंटेंस मेमोराइजेशन हो ओके जमी भी आम लैंग्वेज को लर्निंग करने को चेष्टा करूँ ग्रामर को जमी भी आम पिला बुझे चेष्टा करूँ बट तार गोटे प्रिंसिपल तार गोटे मेथड कन्वर्सेशन गोटे प्रैक्टिसेबल वे रहा निहाती भाव में आवश्यक ओके जमीती कि कौन ना पिला गोटे कंट्रोल वे रही सब जिनस को शिखा लगे देन आम आसला कौन ना मेरिट प्रमोट रीडिंग ओके रीडिंग को प्रमोट कर देन एनहांस वोकाबुलरी स्टूडेंट नॉट ओवरलोडेड विथ ग्रामेटिकल रूल्स नो टीचर रिक्वायर्ड ओके सो
देन आसला आमर डिमेरिट ओके इग्नोर स्पीकिंग आम स्पीकिंग को पूरा इग्नोर मार देता ओके देन राइटिंग एंड लिसनिंग स्किल ताकू भी आम इग्नोर मार देता देन इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट रीडिंग फ्रॉम अंडरस्टैंड ओके बेसिकली कौन ना सेपरेटली जो पे रिडिंग करके अंडरस्टैंड करें पर्टिकुलर इंडिविजुअल उपर जो टीचर मैंने ध्यान देवा दरकार से हो पारि न था कहीं जेहेतु टीचर मान रिक्वायर रोनी से प्रोब्लेमेटिक सिचुएशन आनी था देन टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन मीनिंग ओके जो थी कि कौन ना टीचर आवश्यकता कहीं टीचर सब जिनस को एक्सप्लेन करेंगे मीनिंग बुझे सब जदि जो टीचर नथिबे तो स्टूडेंट मानक निहाती भाव में टी प्रोब्लेम सिचुएशन आसीज ओके सो 2.3 आम आसला कौन ना ओरल सिचुएशन एंड स्ट्रक्चरल अप्रोचेस कौन रोचे structural our situational approach is a scientific study of the fundamental structure of English language, their analyze and logical arrangement. Okay, तो structural situation जोटा कि हमें जानी जो कि scientific study हो fundamental structure हो English language ऊपर है ओके कोई माने analytical logical arrangement कहला हमें बुझी था ओके then it is based upon the assumption that language can be learned through scientific selection and grading of structures ओके तो गोटे बेसिकली कौन ना गोटे स्ट्रक्चरल अप्रोचेस आम कौन करवा ना आम लैंग्वेज को आम सिस्टम को आम आजम्पशन करवा जे केमी बेटर वे आम लैंग्वेज को टीच कर क्यों साइंटिफिकल मेथड हो कौन सी गोटे न्यू लॉजिकल अरेंजमेंट माध्यम आम आम लैंग्वेज को बेटर वे पिला आगे प्रेजेंट कर सो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कौन ना लैंग्वेज हाबिट रहा दरकार यूजफुलनेस रहा दरकार सिंप्लिसिटी रहा दरकार ओके देन टीचेबिलिटी रहा दरकार प्रोडक्टिविटी रहा दरकार ओके so characteristics asila it is lays proper emphasize on overall oral approach it is correct the teaching of grammar and composition with reading lesson okay characteristics कौन होची ना oral और overall approach रहा दरकार okay जो कि कौन grammar और reading रो composition lesson माध्यम में पिला को ठीक भाव में कोरिलेट करेबा okay then आमर आसिला the approach involves selection and gradation of कौन ना मटेरियल ओके ओके सो कौन ना अप्रोच माध्यम आम ग्रेडेशन को सिलेक्शन करवा ओके तो देन मटेरियल सेक्शन कौन रोचे ताकू भी माने इन्वॉल्व करके आम टीचिंग को वर्क करवा देन मेरिट्स आसला कौन ना हैबिट फॉर्मेशन स्ट्रेस ओके हैबिट फॉर्मेशन स्ट्रेस को माने गोटे माने तार मेरिट रोज कौन स्ट्रेस को मेंटेन करें देन स्पीच एंड एम्फासाइज भी क्लियर होता है ओके केयरफुली सिलेक्शन ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन ओके देन इट क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन द पीपल्स ओके ये मेथड द्वारा कौन होता है ना हैबिट स्ट्रेस हैबिट फॉर्मेशन होता है आउ स्पीच मतलब फ्लुएंटली एम्फासाइज होता है ओके केयरफुली सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर कौन होता है ना आम केयरफुली सिलेक्शन करता तार ग्रेडेशन करता जमीती कि कौन ना मैटेरियल ग्रेडेशन हो एप्रोच कौन सी एप्रोच को आम इनवल्व कले ओके से विषय आम जाना पाई था देन कौन ना इट क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन पीपल्स ओके पे भर कौन ना इंटरेस्ट और मोटिवेशन को क्रिएट करता है देन डिमेरिट कौन सा नो सुटेबल फॉर हायर क्लासेस एटा मैंने सुटेबल हुए ना देन नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन बी ऑब्टेन थ्रू दिस अप्रोचेस ओके देन टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब इन कोर्स कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस अप्रोचेस ओके जहाँ भी टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब कर माने कोर्स हिसाब से भी माने पर्टिकुलर वे आम से अप्रोच टीचर मैंने एक्सप्लेन करें ना ओके देन आसला कौन 2.4 communicative language teaching the communicative approach is based on the idea that learning language successfully comes through having to communicate real meaning okay communicate means कौन ना पिला मानक भितर कौन ना ठीक भाव में टीचर आउट पीपल्स मानक भितर ठीक भाव में कनेक्शनिज्म रहिबो ओके जेमिति कि कौन ना पिला माने टीचर पिला को जेमिति टीच करिया चाहिए पिला माने ताको आराम से अडॉप्ट करि पारथिबे पिला मानकर जहाँ भी डाउट माने जहाँ भी माने किसी प्रॉब्लम रोथो टीचर ताको सॉल्व करि पारथिबे ओके सो देन आसला कौन ना the communicative approach is generally different to ask the functional approach okay functional approach ऊपर रिफ्रेश करूँ कहीं it function is what people want to do with the language okay जदि ये करना पिला माने जानिया को पाइबे जे language को से माने केमिति यूज करिवे language से तो से माने कौन करि परिबे okay केमिति बेटर वे रे language को से माने सिखि परिबे so then basic principle कौन रहउची ना teacher main role is a facilitator and monitor rather than leading the class okay तो सेठी कौन ना टीचर को मेन रोल होची facilitator और monitoring करिया पिला को क्लास लीड करवा नुहे
ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଓନ୍ଲି ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଟିଚର୍ କେବଳ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ ଯେ ତୁମେ ହଁ ଏଇ ୱେରେ ଯାଅ, ଏମିତି ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କର। ନାହିଁ ଟିଚର୍ କ'ଣ କରେ ନା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଓକେ, ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଜଷ୍ଟ ୱେ ଅପ୍ କରିବେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ୱେରେ ଯାଇକି ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କର, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍କୁ ନିଜେ କର, ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମେଥଡ଼ରେ ହେଉ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ହେଉ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ହେଉ, ତୁମ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ତୁମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ activity set by teacher have relevance and propose to real life situation। ओके, तो टीचर कौन करेंगे ना एक्टिविटी एमती सेट करेंगे जमीक कि पिलांकर रियल लाइफ सहित खाप खाऊथुव, जमीक कि पिलामानंकु जानवाक एक्सपीरियंस गेन करियाकु सहज हम। देन लेसन आर यूजुअली टॉपिक और देम बेस्ड इन द टार्गेट ग्रामर हिडन इन द कंटेक्स्ट। ओके, तो ग्रामाटिकल नॉलेज भी पिलामानंकु दबाकु पड़ो, जोटा कि हिडन भाव में थी, बट पिलामाने सेटाको आराम से शिखी जाउथिबे, जमीक पिलामानंकु बेसी स्ट्रेस होबनी, आराम से पिलामाने जानि जिवे। देन एम्फासाइज ऑन एंगेजिंग लर्नर इन मोर यूजफुल एंड ऑथेंटिक लैंग्वेज। ओके, तो बेसिकली कौन ना पिलामानंकु एंगेजिंग वे ताको एंगेज करके रखिबा। ओके, जेमती कि कौन ताको ऑथेंटिक लैंग्वेज रो प्रॉपर नॉलेज आमे पिलामानंकु दबाकु लागिबा। देन एडवांटेजेस आसला द इंटरैक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स, लर्नर सेंटर, एटा लर्नर सेंटर थाए, टीचर और स्टूडेंट मान भीतर इंटरैक्शन बेटर होता है, क्या कम्युनिकेटिव अप्रोच रोची ना, तो कम्युनिकेशन रही दुजन भीतर बेटर वे रे। देन फ्लुएंसी इज द प्राइमरी गोल, ए कौन ना फ्लुएंसी प्राइमरी गोल, कहीं टीचर पिला सहित कम्युनिकेट करेंगे गोटे बेटर वे रे। ओके, सो पिला भी टीचर सहित कम्युनिकेट करेंगे, सो फ्लुएंसी रहा दरकार, कौन सी टीचर जहाँ भी कहे पिलाकर जमी बुझिकी ठीक से जापारे टीचर कौन कहते बोली, आ टीचर भी जापारे पिलाने कौन क्वेश्चन करुँच, कौ प्रकार बुझे चेष्टा कर। ओके, देन आसला टास्क बेस्ड, एटा टास्क बेस्ड रहिबो, फोकस ऑन मीनिंग, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन द डिजायर गोल। ओके, सो आसला डिसएडवांटेजेस, इट इज अप्रोच follows on a fluency but not accuracy in grammar and pronunciation। जेहेतु एटा माने गोटे हमर फ्लुएंसी आउ कम्युनिकेटिव वे रे बेसी प्रेशराइज करते हैं, बट ग्रामेटिकल प्रोनाउंसिएशन रे टिके मिस्टेक होबाकु लागि थाए, जेमति कि हम कोन कहि थाउ ना स्पोकन इंग्लिश इज अ ब्रोकन इंग्लिश। ओके, सो सेठी ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत एरर देखिया को मिली थाए। देन द मॉनिटरिंग एबिलिटी ऑफ द टीचर मस्ट बी वेरी गुड। देन आउ कौन रहा द CLT डज नॉट फोकस ऑन एरर करेक्शन, जो कि कौन ना क्लास लर्निंग टीचिंग रे एरर करेक्शन ऊपर बेसी फोकस नहीं थाए। देन नो ग्रामर रूल्स आर प्रेजेंट, सेठी कौन से ग्रामेटिकल रूल्स प्रेजेंट न थाए। ओके, देन आसला 2.5 रे माइक्रो स्किल इन ALT, जोटा कि इंग्लिश लर्निंग टीचिंग रे व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, कौन रोची ना आंसर रे Dwight W. Allen and his colleagues at Stanford University in the USA first adopt in 1961 ने adopt करतले। In the words of Allen, micro teaching is a structured teaching encounter in a class and class time. It is a procedure aimed at simplifying the complexity of the regular classroom teaching process। Okay, so basically कौन ना Dwight W. Allen ए जो हमारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे यूएसए रे फास्ट आपको अडॉप्ट करथिले माइक्रो स्केल टीचिंग को। ओके, 1961 रे से कौन करथिले ना माइक्रो टीचिंग ये जे कौन ना स्टार्टेड डाउन टीचिंग, जो कि कौन ना पिलामानकर क्लास टाइम को आम एनकाउंटर करिथाउ। ओके, पिलामानकर क्लास टाइम को आम मेंटेन करिथाउ, जेमति कि लॉन्जिविटी क्लास हेले आमे ताको कौन ना शॉर्ट टर्म रे स्मार्ट वे रे पिलामानकर आमे पढ़ाइया को चेष्टा करिथाउ। देन इट इज ए प्रोसीजर एम टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेगुलर क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस। ओके, तो बेसिकली कौन आम रेगुलर क्लासरूम रे जो सब कॉम्प्लेक्सिटी रहउची, डिफरेंट माने लॉन्ग लॉन्ग क्लास रहउथबो, ताको आमे सिंप्लीफाई करिकि कौन करबे ना पिलांकु 5 to 10 मिनट भितर आराम से इंट्रोडक्शन देकी तांकर टॉपिक तांको बुझेकी देन तांको आमे रिप्लान करबा, न्यू टास्क दबा, फिर न्यू टॉपिक ऊपर जीवा। ओके, सो पिला को शॉर्ट वे रे स्मार्ट वे रे पिला को पढ़ाइबा को माइक्रो टीचिंग लेवल बोले हमें सॉरी माइक्रो टीचिंग स्किल बोले हमें कहि थाउ। देन आगुर आमे पढ़ितले विषय। देन कैरेक्टर कौन आसला ना इन टर्म ऑफ साइज ऑफ द रेगुलर क्लास ऑफ द टीचर ट्रेनर विल बी टीच स्मॉल क्लास ऑफ और नॉट मोर देन द पीपल्स। ओके, बेसिकली कैरेक्टर कौन ना रेगुलर क्लास रे आमे टीचर कौन करियो ना ट्रेनर आउ टीचिंग स्मॉल क्लास माने स्मॉल क्लास नबा को बेसी चेष्टा करेंगे, रादर देन कौन ना लॉन्ग टर्म क्लास नबा को टिके अवॉइड करेंगे, जमीक कि पिलामानकर अटेंटिव वे रे पिलामानकर गोटे माने इंटरेस्ट आउ तांकर निहाती भाबरे गोटे एक्साइटमेंट रहिबो ना जे हाँ क्लासटा गोटे स्मार्ट वे कौन जिनसटा होउची बोली पिला माने सेया को जानिया चेष्टा करेंगे। देन आसला हाँ टाइम शेड्यूल फॉर ए पीरियड 5 to 10 मिनट्स। ओके, गोटे टाइम शेड्यूल मेंटेन करेंगे 5 to 10 मिनट भीतर। ओके, देन बेनिफिट्स कौन ना इमीडिएट फीडबैक एंड रीटीचिंग एनेबल द टीचर ट्रेनी गेन कॉन्फिडेंस एंड
परफेक्शन इन टीचिंग इट इज गुड और ओनली स्किल टीचिंग ओके बेसिकली कौन ना बेनिफिट आर कौन रोचे ना से टीचर कौन करे पिला फीडबैक नाक लगे ओके जहाँ भी प्रोब्लेम थी सांग सांग से डायरेक्ट मेथड टीचर तक फीडबैक नाक लगे माइक्रो टीचिंग जेहेतु कम टाइम रे क्लास को स्मार्ट वे माने एंड अप करुचे तो सेठी पुणी कौन करेंगे ना रीटीचिंग करेंगे जहाँ भी प्रोब्लेम थी ओके देन सेठी कौन ना पिला न्यू न्यू कॉन्फिडेंस गेन करेंगे न्यू नॉलेज गेन करेंगे गोटे परफेक्शन आसो भितर ओके देन इट इज ए गुड फॉर ओनली एनी स्किल टीचिंग ओके एनी स्किल टीचिंग बहुत गुड आउ बेटर वे मेथड देन स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग कौन होची ना प्लानिंग करबा प्रैक्टिसिंग करबा फीडबैक करबा रीप्लान करबा ओके फर्स्ट प्लानिंग देन तक प्रैक्टिस करबा देन पिला फीडबैक नबा देन रीप्लान करबा ओके देन माइक्रो टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल कौन रोची ना स्किल इन इंट्रोडक्शन फर्स्ट इंट्रोडक्शन दबा क्वेश्चनिंग करबा पिला मानकू ओके एक्सप्लेनेशन करबा पिला मानकू प्रतिटी वर्ड प्रतिटी सिंबल्स ओके प्रतिटी सेंटेंस ताको हमें एक्सप्लेनेशन करबा पिला मानकर देन स्किल ऑफ यूजिंग द चॉक बोर्ड ओके चॉक बोर्ड रो स्किल को यूज करे प्राय पिलांकर नजर कोट रहता है ना टीचर कर मूवमेंट ऊपर ओके दे टीचर केमिति मूव करके माने जिंसटा बुझौचंती ओके सो गोटे आइडियल पॉइंट था कि आम टीचर कहीं पिला माने अधिक टाइम टीचर बॉडी लैंग्वेज उपर जाए ओके सो से हिसाब से कौन ना चॉक बोर्ड यूज को जिते बेटर वे टीचर मेंटेन करेंगे सेमती पिला बुझा से बेटर माने अंडरस्टैंडिंग हम देन स्किल ऑफ रीडिंग स्किल भी बेटर रहा दरकार देन स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट ओके सो लेट्स आमर यूनिट 2 कंप्लीट हो गला।